A hollow sphere is released from the top of an inclined plane of inclination theta. What should be the minimum coefficient of friction between the sphere and the plane to prevent sliding? B. Find the kinetic energy of the ball as it moves down a length L on the incline if the friction coefficient is half the value of calculated in part A. A inclined angle of inclination is theta with part A. Hollow sphere suppose minimum coefficient of friction is mu. इसका mass m, weight is mg. Radius of this sphere is small r. mg के दो component, mg sin theta and perpendicular to this plane is mg cos theta. Reaction of the incline, this r. Frictional force is F, where F is equal to mu r. For equilibrium in vertical direction, the perpendicular direction to the plane, r is mg cos theta और f होगा mu r और mu mg cos theta. इसका acceleration, suppose downward direction of acceleration is a. Net downward force is mg sin theta minus f is equal to ma, equation number 1. Moment of force about the center of this hollow sphere tau will be F into R, and F into R will be equal to A alpha. Alpha is angular acceleration. For no sliding, alpha will be equal to linear acceleration divided by radius, or F is equal to IA by R square. Moment of inertia of hollow sphere about its axis of rotation 2 by 3 mr square into A by R square, or 2 by 3 ma. Put this value of f in equation number 1. So mg sin theta minus 2 by 3 ma is equal to ma, or mg sin theta is equal to ma plus 2 by 3 ma is equal to 5 by 3 ma. m से m क्रॉस हो गया. a is equal to 3 by 5 g sin theta. एक्सेलरेशन होगा 3 by 5 g sin theta.
और f की वैल्यू f विल बी 2/3 ma और 2/3 m into 3/5 g sin theta और 2/5 mg sin theta. From this equation, f is mu mg cos theta. This is mu mg cos theta. mg से mg क्रॉस हो गया तो mu is 2/5 tan theta. Coefficient of friction for sliding, minimum coefficient of friction for to prevent sliding, mu will be 2/5 tan theta. B part, find the kinetic energy of the ball as it moves down a length L on incline if the friction coefficient is half of the value calculated in part A. तो μ1 अगर μ1 लें ये that is mu/2 और 1/5 tan theta. This is incline. यहाँ से ये होलो स्फीयर और ये L लेंथ मूव करता है. ये पोजीशन A, दिस इज पोजीशन B. पोजीशन B पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है. दिस इज L. इसका वेट डाउनवर्ड mg. This is mg cos theta, mg sin theta. This reaction is R1 and frictional force is F1. R1 is equal to mg cos theta, तो F1 होगा μ1 R1 और μ1 mg cos theta और 1/5 tan theta into mg cos theta 1/5 mg sin theta. F1 is less than F. Force F is necessary for pure rolling. Hence, in this case, rolling will not be pure. There will be sliding. UA, speed at A is 0. Suppose speed at B, VB, V. तो V स्क्वायर यहाँ से जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, suppose downward acceleration is A1. तो net downward force is mg sin theta minus F1 is equal to ma1 और a1 is equal to mg sin theta minus F1 by m और mg sin theta minus 1/5 mg sin theta by m 4/5 g sin theta.
displacement S is equal to L, so V square is equal to UA square plus 2A1S और 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4/5 G sin theta into L 8/5 GL sin theta। यहाँ पर रूट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी at B kT is equal to half m v square half m into 8/5 GL sin theta is equal to 4/5 mgl sin theta. For rotational energy, time taken, suppose A to B time t, L will be half A1t square, L half A1 is 4/5 G sin theta t square, so t will be 5L by 2G sin theta का अंडर रूट। Torque about center of the sphere, tau is F1 into R, and this will be equal to I alpha. F1 is 1/5 mg sin theta into R, and this is 2/3 mr square alpha. m से m क्रॉस हो गया, r से एक r क्रॉस हो गया, तो अल्फा इज 3/10 g sin theta by r। यहाँ पर b पर अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, तो ओमेगा विल बी अल्फा इंटू टी, और 3/10 g sin theta by r into 5L by 2g sin theta का अंडर रूट। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट बी के आर बी विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई इज 2/3 mr square into square 9/100
g square sin square theta by r square into phi l by 2g sin theta. 2 से 2 क्रॉस हो गया, 3 3 जा 9 एंड 5 20. 3 by 40 इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एक जी से एक जी क्रॉस हो गया और साइन थीटा से एक साइन थीटा, एम जी एल साइन थीटा. दिस इज के आर बी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. टोटल काइनेटिक एनर्जी एट बी, के ई एट बी इज इक्वल टू के टी प्लस के आर बी. के टी इज 4 by 5 mgl sin theta, and this is 3 by 40 mgl sin theta. 40 mgl sin theta, 32 plus 3, 35 by 40 mgl sin theta, or 7 by 8 mgl sin theta. The total kinetic energy is 7 by 8 mgl sin theta.